Okay, guys, I welcome all of you to another class of FCAT 1 2023। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम में, जहां पे हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास। गाइस, हम लोग की चल रही है स्पॉटिंग ऑफ एरर की सीरीज एंड वेयर वी आर बेसिकली गोइंग टू डू प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग की क्लास 7। जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपके टाइम टेबल से। सो गाइस, हर क्लास में वी आर सीइंग कि किस तरीके से 8 बजे आप लोग की होती है प्रतीक सर की क्लास, जो कि डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। एंड एट 9:30 हमारी होती है डेली डिफेंस अपडेट्स विच इज विद दिव्यांशु सर। एंड फॉलोड बाय दैट आप लोग की क्लास होती है अनुराधा मैम के साथ, विच इज एसएसबी इंटरव्यू लाइव क्लासेस। Right, followed by that, if we talk about FCAT right now, तो 4 बजे you have a class with अनन्या मैम मैथ्स का क्लास, 5:30 बजे इंग्लिश का क्लास, 7 बजे होगा आपका जीके का क्लास विद दिव्यांशु सर, और उसके बाद 8:30 बजे होगा आपका अनन्या मैम के साथ रीजनिंग का क्लास। ठीक है, तो ये तो रहा टाइम टेबल की बात। अभी जल्दी से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ। ठीक है, सो गाइज, हर साल एफकैट में आपके 4 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कंपेरेटिवली एनडीए से कंपेयर करो, सीडीएस से इतने क्वेश्चन नहीं आते एफकैट में। एंड जो लेवल भी रहता है आपके क्वेश्चंस का इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। बेसिक टू मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आपके क्वेश्चंस आते हैं। बट अगेन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉटिंग ऑफ एरर, यू नीड टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द रूल्स एंड in-depth knowledge होना चाहिए about the part of speech that we have: nouns, pronouns, conjunctions, preposition, all these things. So amalgamation of all of this. ठीक है, so now we have started with another part of speech with all of you, जहाँ पे आज हम लोग preposition की बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है गाइज। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे preposition क्या होते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं। ठीक है, एंड देन we'll be doing some questions। ठीक है, सो गाइज, ऑल ऑफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि preposition क्या होता है। preposition इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन और pronoun or a number, sorry, noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relation, or to introduce an object. और we can just basically say कि आपके जो भी preposition रहते हैं, they tell you the relation, है ना। जो भी preposition रहेगा, it will tell you the relation of that noun or pronoun with other part of the sentence. Is my voice breaking for anybody else also? No, ma'am, all clear. अच्छा, यशस्विनी, can you check your internet? Then I maybe it's on your end if you can hear me. Okay, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि आई एम एट होम, ठीक है, तो मेरा रिलेशन पता चल रहा है यहाँ पे पूरे पर कि मैं कहाँ हूँ। आई एम बेसिकली एट माई होम राइट नाउ। ठीक है, मैं अपने होम पर हूँ। इट कैन बी इन रेफरेंस टू टाइम, अगर टाइम का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया। प्लेस हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, एंड सो फोर्थ। राइट, या आई कैन हेयर एवरीवन। वो एक ही क्लास में प्रॉब्लम हुआ था गाइज, आई कैन हेयर एवरीवन फाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क, otherwise we'll do some examples right now. So guys, you all can see that I prefer to read, ठीक है, in the library. So that means when I talk about in as a preposition, that means inside that particular thing. अरे ये क्या हो गया। हाँ, दैट मीन्स इन, इनसाइड, है ना, उसी का बात हो रहा है एज अ preposition। इसी की जगह अगर मैं बात करूं, ही swam across the pool, दैट मीन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, है ना, यहाँ के एंड से वहां के एंड तक। सो ही swam across the pool, right? Then when I talk about the next preposition, we eat breakfast in the morning, so it has been used in the reference of time। ठीक है, हम लोग मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं एट, सो वी जस्ट से वी ईट। नाइट के लिए कर सकते हो, सो वील जस्ट से वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, और इन द, ऑब्वियसली आप ब्रेकफास्ट आफ्टरनून में तो यूजली नहीं करते, तो इन द मॉर्निंग। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट, एनीवन यहाँ पे, किसी को?
नहीं. Okay, then let's move on to the next one. So, guys, these are the kinds of prepositions. ठीक है, we have preposition of time, we have preposition of place, and we have preposition of movement. ठीक है, बहुत सारी categories होती हैं. So, we will explore some of them today and बाद के लिए भी बचाएंगे. ठीक है. So, kind of preposition. So, we can see, guys, some example. Preposition of time में आपका आया हुआ है in, on, for, since, at. ठीक है, etc. preposition of place जो आपको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, where is it, between, among, amid. ठीक है, beside, under. preposition of direction में है आपका along, across, against. और other prepositions आपके जो हो जाते हैं without, with, by, of, around, etc. ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्लिम्स है कि क्या क्या कैटेगरीज आपकी होती हैं. अभी लेट्स टॉक अबाउट देम. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को हम एक्सप्लोर करेंगे. सो गाइस, बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट preposition of time indicates when something is happening, right, or will happen in the future, right. So if I take an example, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गुड इवनिंग. ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन मार्च 10th. है ना, बिकॉज वी आर पर्टिकुलरली रेफरिंग टू द डेट. है ना, तो डेट्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज preposition on. बट इसी की जगह इफ आई टॉक अबाउट अ मंथ देन इट विल बिकम इन, राइट. इफ आई जस्ट रिमूव दिस, आई वॉज बोर्न इन 1996, अगेन ईयर के लिए preposition in. आई वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर चीजों के लिए आप preposition at का इस्तेमाल करते हैं, so we are going to use at. And then I was born 2 minutes before, in time. Okay, so we are talking about in time, before, जो भी time हुआ, right. So right. Right, so the other sister was obviously born at 8:02. ठीक है, और आप 8 बजे हुए. So in time before and in time after. I was born after my uncle's marriage. Is this much clear to everyone? So Yes, this is ma'am. basically a preposition of time for all of you. When we talk about preposition of place will basically tell you where is the noun or pronoun located. The cat is under the table. That means it has something over it. ठीक है, यहाँ पे under. They stepped outside the house, right? So this is the house. They are outside the house. Right, put the bottle over there. Right, so there is hmm. So there's a difference na. Yeah, so basically when I talk about put the bottle over there, so it again means कि उसको, okay, if this is a table, and if I tell someone that put the bottle over there, that means you just keep it somewhere on the table. ठीक है, if this is your bottle, right. Is this much clear to everyone? Under, outside, and over. I guess we should also discuss that. Mm, okay, so guys, if you guys don't know, I'm just going to mention it briefly. There's a difference now between above and over. Do you all know that? So, when I talk about, I'm just going to briefly mention it in case nobody knows it. So, when I basically talk about over, that means I am talking about that somebody is above or whatever, in height. मतलब ठीक है, in height की बात कर रहे हैं. But when I talk about above, that means it is position. ठीक है, usually we use it for like workspace and all these things. So there's a difference between above and over, right? And preposition of movement, इसके example देख लेते हैं. Okay, indicate how something or someone moves from one place to another. ठीक है, to, through, across, off, down. So all these are examples where you will get to see movement of things, right? I will go to bed, right? So basically आपका जो destination वो क्या है? This, you are maybe in your
dining room or whatever. Okay, so this is your destination. You are going to your bed, right? राइट उसके बाद जैक वेंट अप द हिल सो बेसिकली अगेन हम मूवमेंट की बात करें तो व्हाट वुड बी योर मूवमेंट योर मूवमेंट वुड बी लाइक दिस है ना अप डाउन में यू विल गो डाउन ठीक है सो इट जस्ट टॉक्स अबाउट मूवमेंट अक्रॉस में यू गो वन एंड टू अनदर थ्रू में आप क्या करते हैं थ्रू में कोई चीज आपके बाहर रहता है एंड यू जस्ट गो थ्रू इट सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है लाइक यू विटनेस मूवमेंट ओके थ्रू दीज prepositions that we use Abhi, if anyone has any question, so we can ask. Over above is like factual. I don't clearly understand your question. हाँ, एक minute. Let me see your name first. What's your name? Yashaswini. You are new in the class, right? If I'm not wrong. No, I got a direct message now, so I'm just answering that. Yeah, Yashaswini. To some extent, yeah, you are right. Okay, so guys, should we start the question? If everyone is ready. Yes, ma'am. Okay, I welcome to you. Guys, it would be nice if all of you also welcome Yashaswini. She is new, right? So then we'll quickly start the class. I'm anyway, no, I'm sorry, we'll start the question. ठीक है? Okay, so you joined today. Is anybody else new in the class? I guess no. Okay, okay, okay. That's great. That's great. Okay. Okay, okay, okay. Great, great, great. Okay, guys, so let's start, huh? So this is the question that we have. Read each sentence below and find out whether there's an error. So guys, in every class, we do the same thing कि आपको A, B और C मिलता है where you will have an error if any. ठीक है यहाँ पे. And if you think D part में basically there's no error in the sentence, you'll just quickly go to the D वाला part which is gonna be no error. ठीक है? तो उसमें कोई error नहीं है. You are not supposed to focus on the punctuation. That's not our motto. Just grammatical error or anything that you find. ठीक है guys? So let's start with the first one. Okay, they were left with A, no alternatives but to acquiesce with B, his unfair demand C, no error D. बताइए. Acquiescence. Okay, so do you all know the error? Okay, so basically, guys, the preposition that has been used with acquiescence is actually incorrect. Acquiescence के साथ आपको क्या आना चाहिए? The preposition that you should be using is acquiescence in, which would actually mean कि passively you are accepting something, like you are not actively accepting it. ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इसके साथ ये यूज होता है. So passively you are accepting something. So that would be the correct answer. The preposition mistake that we have here. Okay, I arrived A at the coaching B in good time. C, no error D. In good time में क्या problem है? There's a difference, right? When we say at, sorry, on and in. On time and in time.
Guys, there's no error. In good time that you arrived in time. You weren't late. Dot पे भी नहीं हुआ, you were just in time. What is the problem with B part? I arrived at the coaching. That's completely fine. It's a smaller space, so we can use the preposition at. So there's no problem with B as such. अभी तुम लोगों को ना आदत होगी एरर कर करके इतना हर चीज में शक करने की. There's no error here, okay? It's completely fine. मैम हाँ जी. मैम हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं आई अराइव्ड, अच्छा एट द कोचिंग कंपल्सरी है, या एट कोचिंग भी तो कह सकते हैं ना। I arrived at coaching. हाँ वो क्यों बोलोगे आप? आर्टिकल वुड बी बेटर, दैट वुड कंप्लीट द सेंटेंस इन अ बेटर सेंस. हिमांगी, आई अराइव्ड एट द कोचिंग सेंटर मतलब आई अराइव्ड एट कोचिंग. नहीं नहीं नहीं, इनकम्प्लीट. हाँ वही हो गया, नेगेटिव माइंडसेट हो गया भैया तुम लोगों का. अभी ये देखो, पैसेंजर शुड ए बी इन टाइम बी फॉर देयर ट्रेन सी. नो एरर डी. On time, ma'am. It should be. ओके. Ma'am, at what place we should use in time and where we should use at time? Okay, I'll just explain it. That's why I guess there is some problem. Okay, guys, there's Or no error on again. time? Yeah, that's what I'm going to explain. See, let's just imagine that your train was scheduled. Okay, your train was scheduled at 10 a.m. Okay, so if you tell somebody that I was on time, that means you were present at the station or whatever at this particular time at 10 a.m. But when you say that I was there for the train in time, that means you were there before the time. You understand? So there's a difference, right? So at का मतलब sorry, on का मतलब dot. Okay, that particular time. In मतलब before the time. Okay, whatever the scheduled time was. Is it clear to everyone? So that Ma'am, is the at difference. time भी होता है क्या? I mean, correct होगा क्या at time भी? For this question, Like, नहीं, we can use in time, we can use on time. Can we use at time also? at time. No, 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 no. Why would you say at गलत time? होगा ना? Oh, that would be wrong preposition choice, huh? Only in time and on time. Yeah, 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 yeah. When you have something scheduled, these are the prepositions that we are going to use. ठीक है? Okay. Everyone complains against A. Callous treatment B of the police C. No error. Okay, there's a wrong preposition choice here. ठीक है? The one that they have used is not correct. Yeah, A is the problem. See, guys, when we talk about complain, we already know it's completely given that you are complaining against somebody. If I say I am going to complain, so that means it is given in the meaning itself that I'm going to complain against maybe a certain thing or a certain person. So it is redundant of me to use it. ठीक है, मैं उसको बार बार क्यों इस्तेमाल करूँ? So you can just say that everyone complains of. Okay, so आपको against नहीं use करना है. ठीक है, नो ऑफ. हाँ वही. इट्स यूजलेस कि मैं उसको दोबारा से यूज करूं. चलो. फिर तो मैम ऑफ, एक बार दिखाना पीछे वाला स्लाइड. फिर तो ऑफ यूज करेंगे तो ऑफ द पुलिस नहीं होगा ना, फिर बाय द पुलिस होगा ना. एवरीवन कंप्लेन्स ऑफ केयरलेस ट्रीटमेंट बाय द पुलिस. तो ऑफ में क्या प्रॉब्लम है? That is That's what I completely was fine. saying. That's completely fine, guys. There's no issue. You just have to remember everyone complains of is not a better choice, I would say the correct choice, the appropriate choice. ठीक है, like the preposition that you're supposed to use in these cases should be complains of. ठीक है? Of. Complaints of. If you guys know, of is also used as a possession.
It's like used as a possessive preposition of. So complains of this callous treatment. ठीक है? So this would be correct. Yeah. So that would be absolutely correct. There's no problem. हाँ गाइस, कंप्लेन अगेंस्ट देखो, क्योंकि ऑलरेडी आप कंप्लेन कर रहे हो, तो कंप्लेन वी ऑलरेडी नो दैट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट समबडी. व्हाई डू यू वांट टू यूज आई वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट? सो ग्रामेटिकली इट इज अनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट. ठीक है, तो यू आर नॉट सपोज टू, यू कैन जस्ट से ऑफ. ठीक है, नॉट अगेंस्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट समबडी. ठीक है, सो इट्स लाइक repetition of same thing. We already know it entails, the word complains already entails the meaning. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्योंकि कंप्लेन्स का तो मतलब ही होता है ना, यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट. तो वही तो प्रॉब्लम है. अगेंस्ट शुडंट बी देयर, इट शुड बी ऑफ. ओके. मीरा इज वेरी ए पॉपुलर अमोंग हर बी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सी नो एरर डी. Okay, the right sentence is everyone complains of careless treatment of the police. Okay, so that is going to be यहाँ पे you just have to remove this. Should be off. Got it, everyone? So this is going to be the right answer. Then आपको article भी लगाना पड़ेगा ना. Complaints about the then article का भी वो हो जाएगा. So that would be like too much to do for spotting error. Ma'am, among of. Okay. बताइए. Okay, now there is a preposition mistake again. No, within nahi. Within तो मतलब okay. So let's just okay. So guys, when we talk about popularity, okay, in reference, ठीक है. Basically हम लोग क्या बात कर रहे हैं? We are talking about people here. Okay, so Meera is a human being. When we talk about people, the preposition that ideally should be used is Meera is very popular with her friends. Okay, I'll just give one more example so that it becomes clear. If I am talking about any idea per se, ठीक है, so what if I talk about democracy as an idea? ठीक है, so if I say democracy, ठीक है, is very, because democracy is an idea, is very popular among or amongst whatever, ठीक है, then I can use because I am considering it as an idea. But if I'm talking about people, the preposition that I should be used, ठीक है, is very popular amongst, ठीक है, should be with. Is this much clear? Popularity amongst people, ठीक है, we should use with, but for ideas we should be using with. Sorry, amongst or among. Is this much clear to all of you? मतलब इतना चुप बैठे, ऐसा लग रहा है समझ आ रहा है कि आ Ma'am, ही so नहीं रहा है कि बहुत what will be the बहुत कुछ है. correction? That's what I said. Meera is very popular with her friends and relatives. With. विद इन Okay, नहीं ma'am. होगा क्या? विद तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ विद इन क्यों बोलोगे आप? विद इन हर फ्रेंड्स तो किसी चीज के अंदर, वो तो बहुत ही अलग पॉपुलर में है, चला जाएगा. ऐसे थोड़ी होता है. किसी किसी के अंदर पर पॉपुलर विद का अगर ट्रांसलेशन करें तो फिर दोस्तों के नहीं, साथ वो पॉपुलर प्लीज है, ये हिंदी तो नहीं होगा ना. अब ये मत अगर करो. उसका हिंदी अपन ट्रांसलेशन करोगे तो वो तो पूरा आप गलत इंग्लिश सीख जाओगे फिर तो. वो मत करना कभी भी. That's completely wrong, guys. ओके. Please don't do that. And never, whenever you are learning English, never do that. Okay, it never works. Okay. On Diwali, I will a order for a new B pair of spectacles. C no error D.
मैम बी। यस, आपको क्यों चाहिए फॉर? क्या जरूरत है? ऑर्डर फॉर कौन बोलता है? यू कैन जस्ट से ऑर्डर अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, दैट्स इट, है ना? So that will for we don't need for. So this is the correction. You just remove for and everything stays intact. Okay, everything will remain the same. The accused was A, bounded by a chain, B, and taken to prison, C, no error, D. Hmm. First of all, the accused was bound by. We don't say bound by. We actually say, yes, correct. The preposition that we use for bound should be bound with. Okay, तो आपका correction होगा ये. The accused was bound with a chain and taken to prison. We don't use by. ठीक है? By usually instruments और इनके लिए use होता है, so we don't use it here in this case. चलो. My mom assured me A to present me a new smartphone B on my next birthday C, no error D. Excuse me, ma'am. Hmm. Ma'am, Ganga is asking, can we use to after the bound? In the previous question. हाँ, रुको, वही देख रही हूँ मैं. रुको, let me see the question again and I'll see it. एक मिनट रुक जाओ. Let the students answer this. B. Yes, my mom assured me to present me what? Yes, to present me with a new smartphone. That's the correction. ठीक है, तो with आएगा यहाँ पर, जो कि missing है, so that would be the correction, guys. ठीक है, यहाँ पे था ना question. एक मिनट. So the accused was bound with a chain and taken to prison. ठीक है, ये तो किया. उसके बाद क्या बोला? The accused was bound to a chain. बाउंड टू मैम वो तो वो हो जाएगा ना कुछ कंपल्सरी सिचुएशन जैसा, मतलब हाँ, यू आर मतलब बाउंड टू डू दिस वर्क, हाँ, वैसा हो एक जाता है तो वो। नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो जाता है, या फिर आप ऐसा टू डायरेक्शन इधर से इधर दिखाना चाहते हो. तो गाइज यू हैव टू ऑल्सो लुक कि किस तरीके से एक प्रेपोजिशन को हटा देने से उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. ठीक है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि वो जो बंदा था, जो भी एक्यूज था, द पर्सन वाज बाउंड. ठीक है, तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे. वाज बाउंड, उनका रिलेशन दिखाना है. ठीक है, तो बाउंड विद अ चेन, नॉट टू अ चेन. हिमांगी, सॉरी, भवानी, भावनी, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्वेश्चन में भी समझ नहीं आया. इफ वी रिमूव टू दैट कुड बी द रीजन. क्या रिमूव मतलब? समझ नहीं आया मेरे को क्वेश्चन. मैम अच्छा, बी जस्ट पार्ट में टू वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा. रुको. माय मॉम assured मी टू प्रेजेंट. मैम, हम्म. मैम भावनी का क्वेश्चन ये था कि अगर सेंटेंस में हम लोग टू हटा दे, माय मॉम assured मी present me a new smartphone.
तो जस्ट रिलेशन प्रेजेंट पता में। दिखेगा, रिलेशन ही नहीं पता चलेगा। ये तो गलत हो गया, पूरा गलत हो जाएगा। माय मॉम assured me present, you'll be like something is missing. माय मॉम assured me टू प्रेजेंट, ठीक है। मी विद अ न्यू स्मार्टफोन, ठीक है। गाइज ये इन्फिनेटिव का भी तो जरूरत पड़ेगा ना, इतना मत हटाओ कि कुछ मीनिंग ही चला जाए। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन एज शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड बी ऑफ कास्ट क्रीड एंड रेस, सी नो एरर डी। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट होता है ना, है कि नहीं? सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट because of caste, creed, and race. So the correction is right here. It should be against यहाँ पे। पर ये तो दो दो कंजक्शन एक साथ लगाने जैसा हो गया। अगेंस्ट भी है, बिकॉज भी है, फिर है प्लस अगेंस्ट किधर से सी कंजंक्शन? एस। अगेंस्ट तो कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन। मतलब हाँ हाँ समझ गई, मतलब मेरा एक गलत है प्रोनाउंस करने का, लेकिन मतलब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लेकिन किसके अगेंस्ट? रीजन भी एक बिकॉज, मतलब बिकॉज टर्म एक रीजन को डिनोट कर देता है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है हिमांगी, समझ भी नहीं आ रहा, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। डिड इफ एनीवन अंडरस्टूड हर क्वेश्चन प्लीज मेरे को हेल्प करो, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आया। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज ऑफ द कास्ट क्रीड एंड रेस दैट दे बिलोंग टू। दैट्स व्हाट आई वांट टू बेसिकली एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई अगेंस्ट वुड बी अ preposition that I'll use, ठीक है। No discrimination is a general representation of against. How can discrimination is equal to? मैम वो नेगेटिव टर्म जैसा नहीं हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, फिर बिकॉज भी लग रहा है उसमें। बिकॉज से तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेशन का साफ सीधा मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम लोग अगेंस्ट ही हैं किसी के। हाँ, अगर मैंने कंप्लेन की जो बात करी थी, कंप्लेन क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट करते हो तो वो ठीक है, लेकिन गाइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते ही हो। ये मैम तो वो तो है, लेकिन फिर अगर हम लोग बिकॉज भी हटाएंगे तो फिर वो भी फिर एक मीनिंगलेस टाइप लगेगा। शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रेस, वो एक अलग मीनिंग करेगा। हाँ, तो वो थोड़ी हम हटा रहे हैं, वो कौन हटा रहा है? आई जस्ट सेड यू हैव टू, यहाँ पे आपको सिर्फ अगेंस्ट डालना है गाइस, मैम हटाना तो। डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बेसिस ऑफ नहीं होगा क्या? क्या मतलब तुम लोग तो अपना अलग ही बना बना के ला रहे हो गाइस, ये प्रेपोजिशन की क्लास है क्या? ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ? मतलब अलग ही बुक्स लिख रहे हो क्या तुम लोग ग्रामर की आजकल? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे भैया यही रूल होता है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ही बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ एरर निकालो, तुम लोगों से वहां नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे इसका मेरे को रीजन बताओ, नहीं तो तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम नहीं बन पाओगे, ठीक है। एनीवे, हाँ, नो इट्स गुड दैट यू गाइज आर क्यूरियस दो, ओके। Someone's A was served B to him last week, C no error D। See, someone's has been used as a noun, ठीक है। सो उसके साथ जो preposition यूज होता है, हम्म guys, you summon on somebody, okay? So this is basically a rule, okay? Whenever you summons, okay, so this is a noun in this case, right? Like an official bulava, as we say, okay, that the person has to present themselves to the court or whatever. It can be anything. So we don't say to. The preposition that you are supposed to use is on.
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट यूज हो गया फिर से आपका preposition का। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज इट, दिस इज अ रूल दैट वी फॉलो इन, सॉरी, फॉलो इन preposition। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ही वॉज स्लीपिंग ए इन हिज रूम व्हेन अ थीफ बी एंटर इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, सी नो एरर डी। Ma'am, C. Entered into wrong. It should be only entered. Yeah, absolutely correct. See, we already know. We don't want to show the relation that what was the movement of the thief. We just want to talk about that how that thief was basically inside the house. Okay, so we just can use entered. We don't need into in this case. So we just remove it. So it will be he was sleeping in his room when a thief entered his house and took away a lot of things. Very good. नेक्स्ट पे चलेंगे। इन हर कंक्लूडिंग स्पीच कॉमा ए शी सेड ऑलमोस्ट नथिंग बी वर्थ लिसनिंग टू, या सी नो एरर डी। No, B is fine, guys. There's a problem with C actually. Okay, let's talk about it. Hmm. Okay. So basically, whenever we have verbs, okay, or words like listen, okay, which is in this case is listening, and if they do not have any object, okay, after the preposition you can see there's a preposition but it doesn't have any object. Object can be either a noun or a pronoun, so we do not need this. Okay, so we just remove two. It will be in her concluding speech she said almost nothing worth listening. That's it, because it doesn't have any object, so we don't need the preposition as well. Yeah, correct. It was apparent for A, everyone present that if the patient did not receive B, immediate medical aid, he would die. ये तो बहुत easy है, it's really easy. Yeah, we don't say it was apparent for, ना, it was apparent to everyone, like everybody could see it clearly. ठीक है, so apparent to everyone, not for everyone. So that would be the correction. He proposed me A that we should go to the disco and then have B dinner at the restaurant. C, no error D. Can also say restaurant actually. He proposed to me, na? He proposed to me that we should. Yeah, so we always say he proposed to me, not me. He proposed to me and blah blah blah. Whatever is the. Yes, correct. There appears A to be a little liaison B among the two groups of the society. C, no error D. Ma'am, C. Between the two groups. Yeah, because we are clearly talking about two parties involved here, so it is wrong preposition choice, so it should be between. Correct. The team A complained to the manager against the captain B and the poor facilities provided in the hotel. C, no error D. Something is missing here.
See, they have already used a preposition that the team complained to the manager against the captain, so it is against somebody. Okay, that's correct. But what about the part where we have the poor? You are not complaining against, okay, you are not going against it. You can just say about the poor facilities, उसके बारे में, ठीक है? You are not against it ना किसी तरीके से, so you can just say about the poor facilities provided in the hotel. So that would be the correct answer. Yesterday, comma, I met a man B who was blind with the right eye. C, no error D. We are just talking about one eye. No, preposition ये नहीं यूज होता. No, guys, actually, in these cases, what we use is yesterday I met a man who was blind in the right eye. Or even if I say, if it's just one eye involved, like with आप तब इस्तेमाल कर सकते हो, maybe the person is blind दोनों eyes में, ठीक है, then it's fine. But since we are talking about left or right, so you just say in. This is a rule that we follow. So in the right eye or in the left eye, ठीक है. हाँ, द एरर का पार्ट आपने लोगों ने सही बोला है. सो एग्जाम में तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द रीजन ऑब्वियसली. सो okay, the principal distributed A the sweets among our friends B who bade him farewell. C, no error D. क्या एरर है बताओ, किसी को पता है या नहीं है एरर? कोई आंसर नहीं आया इसका. Actually, you know what? Like, I'll just specify something. कि see, they have no. यहाँ पे इसमें नहीं एरर, इसमें बी में एरर दिखाया गया. आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई समथिंग गाइस कि अमंग और अमंग्स का एक ही मीनिंग होता है. लाइक वी कैन यूज इट इंटरचेंजेबली. तो मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर होना नहीं चाहिए वैसे. नहीं, यूज कहाँ होता है? among का यूज तब होता है ना when you have a lot of people. Like between is basically for two people when you have a lot of people and you are amongst them. ठीक है, there are so many people, so we just use among or amongst because we can use it interchangeably. तो इसका जो correction है वो ऐसा हो सकता है. But again we can use it interchangeably, तो I don't think there should be an error. बाकी ये है, ठीक है. So I just wanted to tell all of you. As per the invitation card, Rahim marries with Saira B on 13 December. ठीक है, Monday. No error D. Marries to बोलते हो आप? Marries to या सीधे बोलो रहीम marries सायरा? विद की क्या जरूरत है? Marries to. गाइस ऐसा ऐसा किधर हुआ? सीधे बोलो ना रहीम मैरिज सायरा. विद क्यों लगाओगे और टू भी क्यों बोलोगे? मैरिज टू सायरा नहीं, जस्ट से मैरिज सायरा. कहाँ होता है मैरिज टू? वो पैसिव वॉइस में होता है आई थिंक. हाँ इस हाँ अभी कार्ड की बात तो मत करो.
वो वाली इंग्लिश की बात मत ही करो यहाँ पे। विद लिखा होता है। पता कार्ड्स में तो क्या क्या लिखा होता है गाइस, लेट्स नॉट गो देयर, मतलब आरआईपी हो जाएगा इंग्लिश का। एनीवे, okay, the debacle of the Congress party, A, admit no other explanation, okay, then its poor performance during the last 5 years, C, no error, D. Right. Bit off. Hmm. Yeah, it's actually B. It should be the debacle of the Congress party admit of. Okay, no other explanation. Then it's poor performance during the last 5 years. ठीक है, so that would be the preposition choice. ठीक है, admit to तो आप बोल ही नहीं सकते, admit of बोलोगे. ठीक है. ओके गाइस, तो ये थे आपके क्लास के क्वेश्चंस. अभी मैं होमवर्क के क्वेश्चन दिखा रही हूँ, सो हैव अ लुक. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड. अच्छा, गंगा जी इज आंसरिंग द होमवर्क क्वेश्चंस आल्सो, आई गेस. This is second last, and this is gonna be the last one. Okay, guys. So I'm quickly going to announce, and then wait a second. Okay, guys. So thank you so much for watching this session. ठीक है, I'll be meeting all of you in the next class, जहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू क्लास with another topic with all of you, जो कि आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ. एक मिनट. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बेसिकली बी डूइंग स्पॉटिंग एरर, प्रेपोजिशन का पार्ट 2. ठीक है, सो